नमस्कार दोस्तों, मेरे डूअर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड लास्ट क्लास है जो कि डिस्कस करूँगी। सो आप सभी लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन करें, हर दिन ज्वाइन करें और इस चैप्टर से डिस्कस किए गए सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और फिर उसे मेमोराइज ही कर लें। क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आएंगे और इतने से ही आएंगे। सो आप सारे क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट करें और इसे ज़रूर अच्छे से पढ़ें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो इन्हें सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें न्यू अपडेट्स हमारा मिलता रहे। तो चलिए आज हम फिर से नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। विच रेशियल डिफरेंस इन रेस्पॉन्स टू ड्रग्स हैज़ बीन मेंशन्ड इनकरेक्टली बिलो। कौन सा इसमें इनकरेक्ट है आपको देखना है। ऑप्शन ए, अफ्रीकन्स रिक्वायर्ड हायर कंसंट्रेशन ऑफ एट्रोपाइन्स टू डायलेट प्यूपिल्स। ऑप्शन बी, ब्लैक races आर मोर रेस्पॉन्सिव टू एंटी हाइपरटेंसिव एक्शंस ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। ऑप्शन सी, Japanese आर मोर प्रोन टू डेवलप एस्मोन ड्यू टू हेलोजेनेटेड हाइड्रोक्विनोलिन्स। Option D, chloramphenicol induced aplastic anemia is rare among Indians. आंसर इसी में है दोस्तों। आप सही से क्वेश्चंस को पढ़िए फिर आप इसे आंसर करिए। कौन सा रेशियल डिफरेंस है दोस्तों इस ड्रग में जो नीचे दिया गया है, आप बताएं। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ब्लैक रेसेस आर मोर रेस्पॉन्सिव टू एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। ऑप्शन बी। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस इज ड्यू टू अ स्पेसिफिक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। ऑप्शन ए, टेट्रासाइक्लिन इंड्यूस सनबर्न लाइक स्किन लीजन्स। ऑप्शन बी, क्विनिडाइन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ऑप्शन सी, मेटोक्लोप्रामाइड इंड्यूस्ड मसल डिस्टोनिया। ऑप्शन डी, प्रीमाक्विनाइन इंड्यूस्ड मैसिव हेमोडायलिसिस। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, प्रीमाक्विनाइन इंड्यूस्ड मैसिव हेमोडायलिसिस। प्रीमाक्विनाइन इंड्यूस्ड मैसिव हेमोडायलिसिस, ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ड्रग मेटाबॉलिज्म कैन इंड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। ड्रग metabolism can be induced by the following factors except. Option A, cigarette smoking. Option B, acute alcohol ingestion. Option C, exposure to insecticides. Option D, consumption charcoal broiled meat. Consumption charcoal broiled meat. दोस्तों आप सारे क्वेश्चन सही से कर जाइएगा। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। नाइपर में भी और जीपैट में भी
क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट उठा लेता है एग्जामिनर। सो आप सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ जाइए ताकि ये दिक्कतें ना आए आपको। आपकी सारी तैयारियां रहेंगी, इस क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चंस आपके तैयार रहेंगे तो आप एग्ज़ाम में आप सही आंसर दे पाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक्यूट अल्कोहल इंजेक्शन। एक्यूट अल्कोहल इंजेक्शन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। A drug which produces qualitatively different actions when administered through different routes is option A phenytoin sodium, option B hydralazine, option C magnesium sulfate and option D nitroglycerine। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ प्लेसिबो। ऑप्शन ए प्लेसिबो इज अ डमी मेडिकेशन, बी प्लेसिबो इज अ इनर मटेरियल एडेड टू द ड्रग फॉर मेकिंग टैबलेट्स, ऑप्शन सी प्लेसिबो डू नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, option D all patients responds to placebos, option D all patients respond to placebos। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, मैं उसे पूरा करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्लेसिबो इज़ अ डमी मेडिकेशन। प्लेसिबो इज़ अ डमी मेडिकेशन। नेक्स्ट 51 देख लेते हैं। इन पेशेंट्स ऑफ हेपेटिक सिरोसिस, ऑप्शन ए द एक्सटेंट ऑफ चेंजेस इन अ फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग्स can be predicted from the values of liver function tests, option B high doses of furosemide can be safely used, option C metformin is the preferred oral hypoglycemic, option D dispositions of atenolol is not significantly affected। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, डिस्पोजिशन ऑफ एटेनोल इज़ नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। ऑप्शन डी, डिस्पोजिशन ऑफ एटेनोल इज़ नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। नेक्स्ट, in patients with renal insufficiency, the clearance of the following drug is reduced parallel to the reduction in creatinine clearance. Option A propranolol, option B digoxin,
ऑप्शन सी लिग्नोकेइन, ऑप्शन डी वेराप्रामेल। वेराप्रामेल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी डाइगॉक्सिन। नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर यूरेमिक पेशेंट्स। ऑप्शन ए, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? So option A, attainment of steady state plasma concentration of drugs eliminated through the kidney is hastened, or option B, pethidine can cause seizures. C, diazepam produces exaggerated CNS depression. Option D, tetracyclines further raised blood urea level. तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अटेनमेंट ऑफ स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स एलिमिनेटेड थ्रू द किडनी इज hastened. Option A. Next, in congestive heart failure patients, option A, in congestive heart failure patients, option A, volume of distribution of all drugs is increased. B, hepatic clearance of drug is unaffected. Option C, orally administered diuretics may not be effective but the same way work parenterally. Option D, inotropic action of digoxin is attenuated. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट्स को दोस्तों क्या प्रॉब्लम्स होती है इसमें से? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, orally administered diuretics may not be effective but the same may work parenterally. दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. Interactions between the following pair of drugs can be avoided by making suitable adjustments. Option A, levodopa and metoclopramide. Option B, furosemide and indomethacin. Option C, tetracycline and ferrous sulfate. Option D, clonidine and chlorpromazine. Clonidine and chlorpromazine. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सॉरी इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टेट्रासाइक्लिन्स एंड फेरस सल्फेट. टेट्रासाइक्लिन्स एंड फेरस सल्फेट, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Drug accumulation is the basis of organ toxicity of the following drug when used for prolonged periods. Option A, prednisolone. Option B, chloroquine. Option C, aspirin. Option D, hydralazine.
तो इसका सही ऑप्शन है क्लोरोक्विनाइन, ऑप्शन बी क्लोरोक्विनाइन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉलरेंस इज अ जनरली नॉट एक्वायर्ड टू, ऑप्शन ए एंटी सेक्रेटरी एक्शन ऑफ एट्रोपिन, ऑप्शन बी सीडेटिव एक्शन ऑफ क्लोरोप्रोमाजाइन, ऑप्शन सी इमेटिक एक्शन ऑफ लियोबोडोपा, ऑप्शन डी वेसोडाइलेटर एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एंटी सेक्रेटरी एक्शन ऑफ एट्रोपिन, एंटी सेक्रेटरी एक्शन ऑफ एट्रोपिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, significant tolerance does not develop to the following action of morphine, option A analgesia, option B euphoria, option C sedation, ऑप्शन डी म्योसिस। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों म्योसिस, ऑप्शन डी म्योसिस। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन एनेस्थेटाइज्ड डॉग रिपीटेड इंट्रावेनस इंजेक्शंस ऑफ एपिड्राइन shows the phenomenon of, ऑप्शन ए एनाफाइलेक्सिस, ऑप्शन बी टैकीफाइलेक्सिस, ऑप्शन सी आइडियोसाइनक्रेसी, ऑप्शन डी ड्रग रेजिस्टेंस। In an anesthetized dog, repeated intravenous injections of ephedrine shows the phenomenon of, option A anaphylaxis, option B tachyphylaxis, option C idiosyncrasy, option D drug resistance। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टैकीफाइलैक्सिस, टैकीफाइलैक्सिस, ऑप्शन बी। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। An undesirable effect of a drug that occur at therapeutic doses and can be predicted from its pharmacological actions is called A. Side effects, B. Toxic effects, option C. Allergic reaction, option D. Idiosyncrasy। ऑप्शन ए साइड इफेक्ट्स, ऑप्शन बी टॉक्सिक इफेक्ट्स, ऑप्शन सी एलर्जिक रिएक्शन, ऑप्शन डी आइडियोसाइनक्रेसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आइडियोसाइनक्रेसी। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप बी अनप्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ऑप्शन ए साइड इफेक्ट्स, ऑप्शन बी टॉक्सिक इफेक्ट, ऑप्शन सी आइडियोसाइनक्रेसी, ऑप्शन डी फिजिकल डिपेंडेंस।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइड इफेक्ट ऑफ अ ड्रग विच हैज़ बीन यूज्ड एज अ थेराप्यूटिक इफेक्ट इन another condition is option A, constipation caused by codeine, option B, cough caused by captopril, option C, uterine stimulation caused by quinine, option D, diarrhea caused by ampicillin. Which option is correct? So the option A is correct. Constipation caused by codeine. Option A, constipation caused by codeine. So next question. A toxic effect differs from a side effect in that option A, it is not a pharmacological effect of the drug. Option B, it is a more intense pharmacological effect that occurs at high dose or after prolonged medication. Option C, it must involve drug-induced cellular injury. Option D, it involves host defense mechanisms. Which options? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इट इज़ अ मोर इंटेंस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट that occurs at high dose or after prolonged medication. Option B. So next question. The following statement is true in relation to drug toxicity and poisoning. Option A, the two terms are synonymous. Option B, when a toxic effect requires specific treatment, it is called poisoning. Option C, a toxic effect which endangers life by markedly affecting viral functions is called poisoning. Option D, toxicity is caused by drugs while poisoning is caused by other harmful chemicals. Which is the options? So correct answers will be option C. A toxic effect which endangers life by markedly affecting vital functions is called poisoning. Next question. Use of an emetic to remove the ingested poison is contraindicated in following poisonings except that by option A, strychnine, option B, caustic soda, option C, ferrous sulfate, or option D, kerosene. Which is accept? So correct option is option C, ferrous sulfate.
ferrous sulfate. Except ferrous sulfate we can use other. Next question, which of the following is an idiosyncratic adverse drug reaction? Option A, muscle dystonia caused by triflupromazine. Option B, isomania after taking phenobarbital. Option C, precipitation of asthma by morphine. Or option D, gum hyperplasia caused by phenytoin. So option B is correct, insomnia after taking phenobarbital. Option B, insomnia after taking phenobarbital. Next question, an immunologically mediated reactions to a drug producing stereotype symptoms unrelated to its pharmacodynamic action is option A, hypersensitivity. Option B, supersensitivity. Option C, intolerance. Option D, idiosyncrasy. So option A will be correct, hypersensitivity. Hypersensitivity. Drugs producing allergic reactions generally act as option A, complete antigens. Option B, haptens. Option C, antibodies. Option D, mediators. So correct answer will be option B, haptens. Haptens. Next question, the following allergic drug reaction is caused by circulating antibodies. Option A, serum sickness. Option B, anaphylactic shock. Option C, systematic lupus erythematosus. Option D, angioedema. So correct options will be option A, serum sickness. Serum sickness. Next question, which of the following is the only life-saving measures in case of anaphylactic shock? In case of anaphylactic shock, which is the life-saving measures? Option A, intravenous hydrocortisone hemisuccinate. Option B, intravenous chlorpheniramine maltase. Option C, intramuscular adrenaline hydrochloride. Option C, intravenous glucose saline. Option A, intravenous hydrocortisone hemisuccinate. Option B, intravenous chlorpheniramine milates. Option C, intramuscular adrenaline hydrochloride. Option D, intravenous glucose saline. So option C will be correct, intramuscular adrenaline hydrochloride. Option C. Next, the type 2, type 3 and type 4 hypersensitivity reactions can be suppressed by option A, adrenaline. Option B, antihistaminics. Option C, corticosteroids. Option D, sodium chromoglycate.
So option C will be correct, corticosteroid. Corticosteroid. Next question, the most appropriate route of administration for adrenaline in case of anaphylactic shock is. एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम एड्रेनलिन का क्या रूट, एड्रेनलिन देने के लिए हम क्या रूट चूज़ करेंगे? इंट्राकार्डिक, ऑप्शन बी इंट्रावेनस, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन डी सबक्यूटेनियस. सो आंसर विल बी इंट्रामस्कुलर. इंट्रामस्कुलर रूट हम चूज़ करेंगे एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग देने के लिए. सो ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्राडर्मल ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी. टाइप, ऑप्शन ए टाइप 1 एनाफाइलेक्टिक, टाइप 2 साइटोलाइटिक, ऑप्शन सी टाइप 3 retarded, option D all the above. Which test can be detect intradermal drug sensitivity? So option A type 1 एनाफाइलेक्टिक. एनाफाइलेक्टिक टेस्ट हम करेंगे इंट्राडर्मल ड्रग सेंसिटिविटी के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडिक्टिंग ड्रग विच प्रोड्यूसेस लिटिल और नो फिजिकल डिपेंडेंस इज. ऑप्शन ए डायजेपम, ऑप्शन बी फेनोबार्बिटोन, ऑप्शन सी एम्फेटामाइन, ऑप्शन डी मिथाडोन. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी एम्फेटामाइन. Next question, the essential feature in drug addiction is. Option A physical dependence, option B psychological dependence, option B both physical and psychological dependence, option D psychiatric abnormality. Which is the essential feature in drug addiction? So correct answer will be psychological dependence. Psychological dependence. Next question, adaptive neuropsychological changes produced by repeated administration of a drug which results in the appearance of characteristic withdrawal syndrome on discontinuation of the drug is called. Option A drug addiction, option B drug abuse, option C psychological dependence, option D physical dependence. Which one? So correct answer will be option D physical dependence. Physical dependence. Which of the following continues drug abuse? Which of the following constitutes drug abuse? Option A physician prescribed use of penicillin G for the cure of viral fever. Option B self administration of aspirin to relieve headache. Option C repeated self administration of morphine to drive euphoria. Option D all the above. So option C will be correct. Repeated self administration of morphine to drive
euphoria. Repeated self-administration of morphine to drive euphoria. Option C. Next question. Addiction and habituation. Addiction and habituations. Option A are fundamentally different phenomena. Option B are produced by different set of drugs or substances. Option C differ from one another by the presence or absence of physical dependence. Option D differ from each other in the degree of attendant psychological dependence. Which options is the correct? So correct answer will be option D, differ from each other in the degree of attendant psychological dependence. Differ from each other in the degree of attendant psychological dependence. Option D. Next. Adverse consequences may follow sudden discontinuation of the following drug after chronic intake. Option A cocaine, option B cannabis, option C clonidine, option D all the above. Adverse consequences may follow sudden discontinuation of the following drug after chronic intake. एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है दोस्तों? जो लंबे समय तक कोई ड्रग आदमी ले रहा हो उसके लिए क्या एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होता है, कौन सा फॉलो करेंगे? ऑप्शन सी क्लोनिडाइन. क्लोनिडाइन. Next question. The most vulnerable period of pregnancy for the causation of fetal malformations due to drug is. The most vulnerable period of pregnancy for the causation of fetal malformations due to drug is. Option A 18 to 55 days of gestation. Option B 56 to 84 days of gestation. Option C second trimester. Option D 36 weeks onwards. So correct answer will be option A 18 to 55 days of gestation. 18 to 55 days of gestation. Next question. The following is a proven human teratogen. Option A chloroquine. Option B warfarin sodium. Option C dichlolamine. Option D methyl dopa. ऑप्शन डी मिथाइल डोपा. तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी वारफेरिन सोडियम. वारफेरिन सोडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the drug which has been found to be a strong human teratogen. Select the drug which has been found to be a strong human teratogen. Option A isoniazid. Option B isotretinoin. Option C hydralazine. Option D propylthiouracil.
तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों आइसोट्रेटिनोइन, आइसोट्रेटिनोइन, ऑप्शन बी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एमसीक्यूज़ थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं। आप इसे सही से तैयार करके कंप्लीट कर लें और दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस में रिलेटेड टू चैप्टर 2 में सारे कल डिस्कस करूँगी। सारे तो डिस्कस नहीं हो पाएंगे, मैं पार्ट वाइज सारे डिस्कस करूँगी। तो आप आज तक जो भी क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं क्लास में रिलेटेड टू चैप्टर 1, आप सारे उसे कंप्लीट कर लें। थैंक यू।